So guys, finally we are live. After a long time, it's been I think more than a week, most probably. We are getting live now. So we are having some new updates for you. कुछ नई नई चीज़ें आप सभी के लिए. सबसे पहला अपडेट तो फ्री बैच के बारे में. सो यू नो 3 months बैक वी हैव डिसाइडेड कि हम एक फ्री बैच लॉन्च करेंगे और आगे के सालों में वो फ्री बैच कंटिन्यू करेंगे. हर बार वो खत्म होगी तो नई लॉन्च करेंगे. बट व्हाट हैपेंड कि वो फ्री बैच हमने स्टार्ट की, स्टूडेंट्स भी आए एंड उन्हें पढ़ाया भी और बहुत मज़ा आया. लिटरली मुझे महसूस हुआ कि वो भी इतने खुश हुए पढ़ के और मुझे भी पढ़ा के बहुत खुशी हुई. But eventually one thing that didn't work out, that was about the financial thing. कि जो उन 3 महीनों में, क्योंकि फ्री बैच में हमने टोटली फ्री पढ़ाया तो इनकम काफ़ी रिड्यूस हो गई. उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑफिस और जो जो खर्चा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. मीन्स उसमें प्रॉब्लम आने लगी. फाइनली वी गॉट टू नो कि हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, ऑफलाइन जो स्पेस है उसकी एक कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, लाइट बिल्स है, इंटरनेट बिल्स है, सब्सक्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. अब ये सारी चीज़ों के बाद ये कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं हो सकता. सो वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च समथिंग न्यू एंड फाइनली वी कम अप विद अ सॉल्यूशन कि फ्री बैच तो कंटिन्यूस पॉसिबल हो नहीं सकता. एक बैच तो शुरू की, ख़त्म कर दी सक्सेसफुली, बट उसमें हमको एहसास हो गया कि फर्दर करना ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट, जहाँ से वो कंपनसेट हो पाए. फाइनली हमने डिसाइड किया कि वी गोना लॉन्च अ मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, बट दैट विल बी प्री रिकॉर्डेड. सो 2 कोर्स हमने लॉन्च करने का डिसाइड किया. द वेरी फर्स्ट कोर्स इज द SAS base, advanced and clinical, but in clinical overview. ठीक है. And there will be one final mock interview और that will be pre-recorded course. तो आप pre-recorded course में से पढ़ोगे, उसमें doubt discussion recordings, each of the recordings will be available. Basically everything is there in that recording apart from project. उसकी फीस होगी 6,999. I feel this is the most affordable course in the entire industry. And the second course, that is SAS base, advanced, clinical and project SDM Adam table listing, plus base SAS exam preparation, plus 6 live doubt discussion session, plus 1 mock interview session. Because in both of this course you're gonna get a certificate as well after completion and mock interviews. Now the second course, which includes project SDM Adam table listing plus base SAS exam preparation plus everything else. So the fees for this is 11,999, and for the first 20 people it will the 11,999, but for the first 20 people it will be 9,999. So I believe this is the most affordable fees we can offer you. So what will be the benefit of this? The benefit of this will be ki so at least that money will help us to keep running, right? Because we decided for free batch, but that is not working for such long. उससे नहीं चलेगा. I felt like, so I believe this course gonna help you a lot, guys. For this new course, 2 different courses. One is 6,999, another is 11,999. Which is pre-recorded plus live doubt discussion session. More details you will be getting. आगे की डिटेल आपको कमिंग वीडियो में मिल जाएगी. कल ही मोस्ट प्रॉब्ली एक वीडियो अपडेट होगी और उस पर आपको आगे की डिटेल मिल जाएगी. एंड कुछ न्यू अपडेट्स मिले. मैं रिसेंटली एक लिस्ट रेडी कर रहा था. आई वॉज मेकिंग अ लिस्ट कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं. तो इंटरेस्टिंगली, क्योंकि अब मुझे पढ़ाते हुए 4-5 साल हो गए, आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन डिफरेंट एमएनसीज. जो छोटी कंपनियों में थे वो बड़ी कंपनी में चले गए, जो बड़ी कंपनियों में थे दे वेंट टू द बिगर वन एंड टू द टॉप वंस.
and some people have switched their roles as well. कुछ CDM में काम कर रहे थे, they went to statistical, and some people were working in statistical, and they got an data scientist role. So काफ़ी अच्छा लगा ये सारी चीज़ें डिस्कस करके और उनसे जान के they are growing, and even the salaries are growing. मे बी रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को 3 साल में 13, 14, 15 का मिला, एंड कुछ स्टूडेंट्स थे जो जिनको काफ़ी अच्छा पैकेज मिला 3 साल में. इट्स लाइक इट वेंट शूट अप टू 18 to 20, मतलब 20 लाख तक चला गया 3 साल में. तो ये सारी चीज़ें जान के भी अच्छा लगा. एंड स्लोली व्हाट आई एम सीइंग कि हर जगह ऐसा हो रहा है, स्पेशली इन द सीआरओ, कि जो जिसको टूल्स का नॉलेज है, सैस, आर या पाइथन, उनके लिए अलग अलग रोल्स अवेलेबल है. जैसे कि जिसको सैस, आर, पाइथन और क्लिनिकल का नॉलेज है, वो आज के टाइम पे 4 रोल्स के लिए एलिजिबल है. सीडीएम प्रोग्रामर और सीडीएम डेटा प्रोग्रामर, ऐसा कुछ भी है, मतलब उसमें सैस का रोल है. एंड another is statistical programmer, another is data scientist. Means, so if you get this skill कि आपको SAS आता हो, clinical आता हो, R and Python आता हो, if you have this skill, you are eventually eligible for 4 roles. All those 4 roles are high paying roles. वो चारों के चारों high paying role है CRO industry में. तो ये सारी चीज़ें फेल्ट दिस आई गॉट टू नो कि डिस्कशन के बाद बेटर क्लियरिटी आ रही थी कि मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है. ओके, Sri Ram is asking, I have completed, I'm 2024 and worked as a medical coder for 6 months. Can I enter CRO as a clinical data analyst? Of course, Vishnu, you can. If you want to do one-to-one discussion with me, you can connect me through one-to-one counseling. You can check the link in video description. Akhil, this fresher has to be perfect in Adam and TLF. Fresher had to be perfect in SAS software. He should have the complete knowledge of SAS software, which include base and advanced. Akhil. And another is in clinical, he should have the robust knowledge of clinical trial phases, protocol, SAP, spec, mockshell, then SDM dataset, and then Adam, and then table listing. So Adam and TLF can be the secondary, the primary is SDM. सबसे पहले तो आपको SDM का strong knowledge होना चाहिए. Hi Ashwini. Okay, so whenever I have seen this कि काफी दिनों के बाद live आओ तो less people are there. What are the things we need to more perfect in SDM? The very first is SDTM-IG. Read SDTM-IG as much you can. Second, create at least 4 to 5 data sets from SDM. Okay. And SDM is all about variable, the data set and variable. Okay, let's suppose there is a data named adverse event. So what this data gonna contain? Adverse event related data. And so if the data is adverse event, which are the important variable or core variable for this data? AE term, which gonna include the adverse event term. AE start date, AE end date, adverse event start date, end date. So likewise, if you prepare yourself, it's gonna help you a lot. Satyam, sir, I have completed MSc Statistics. Done CDM SAS training with not getting entry.
Currently working as an assistant professor of statistics ad hoc basis. Want to switch my job. CDM SAS training. CDM SAS training. Okay, I didn't got you. CDM SAS training means you learned the complete SAS software, base, advanced, and in the clinical part, do you have the knowledge of creating SDM, ADAM, table listing, protocols, app? Do you have these knowledge? Because these are the requirements. So before going towards your question, like I wanted to know you have the sufficient skill or not. Yes, sir, base and advanced also. So you have learned SAS base and advanced. How about the clinical part, like SDM, ADAM, table listing, having the knowledge of protocol, SAP, mock shell, spec, these things. Do you have the knowledge of clinical part, Satyam? So guys, I forgot to share our live stream in the Telegram group. Let me do it. Hmm. Now let's get back to your question. So Satyam, after this you can connect to me. Uh, I do provide counseling sessions for working professional as well and for freshers as well. So that might help you. First, I'll be asking you that what are the ways you are applying for a job, and then I'll be sharing you what are the other ways you can apply for a job. Like if you are not doing in a correct way, maybe I can guide you. So you can connect to me through one-to-one counseling session. Then we can have one-to-one discussion. Akhil, how do we get resources for interview preparation? See, I have already uploaded videos on my channel, like interview questions, interview pattern. There is a playlist on my YouTube channel. Just go and check interview playlist. Not interview playlist, interview pattern, where I have shared different patterns of different companies and interview questions as well. Just go and check. If you simply write interview questions and answer and write my channel name Mr. Seeker, you will get a lot of videos where I've shared a lot of scenario based questions, small questions, MCQ based questions, or big questions. Shivatmik Reddy, as a graduate, how can I know whether which course is having best jobs? Is there anything like that to know, or else I have to go on master's course until I get the job? See, uh, Shiva, if you are, let's suppose, if you have done your graduation from statistics, mathematics, or biotechnology, B pharmacy, so there are some roles I can share you. That is CDM programmer, statistical programmer, and data scientist as well. In CRO only data scientist roles are there. So you can try these roles. These are the highest paying roles, and there are further more roles like PV and other, but those are not the growth and pay is not that much great, but still you get online work and you get good salary. Until unless you get the best jobs, you can start with any. Now coming to masters or bachelors,
So see, when competition is more, na companies prefer master student. Uh, but right now the market is accepting bachelors and masters, both the students. We are eligible for all the job roles if you are having minimum bachelor's degree. Okay, but at some places sometimes masters are preferred when the competition is more. Now, how to get an idea which course or which job is good for me as per my educational background? You need to connect to working professional or the expert who are having the knowledge. You can even connect to me through one-to-one counseling or anyone else on LinkedIn. Those who can guide you. Either he have the exposure of your industry, the industry you wanted to work, or that he is having the same educational background which you are having. So you can get an idea. Akhil is asking, I've already seen it on the channel, that how we can other questions. Other questions then, Akhil. Recently, I have created a book, not book. Recently, I have created a video based as exam preparation. So for base as exam preparation, I have shared a book, SAS Specialist version 9.4. SAS Guide was version 9.4. Just open that book and you'll find a lot of small MCQ questions and scenario-based questions. So at least 100, 200 questions you can get from there. Rahul is asking, sir, is online degree is valid or in India private jobs? See, online degree is valid if you have good knowledge. If you don't have the knowledge, the degree will be not helpful for you, because ultimately companies are looking for skills along with degree, because in 2025 skills are more important than your degree. Minimum like graduation is required to get job interview, but then it comes to the skills only. You should be clear like what skills are required and which job role I am looking for. आपको जॉब पता होनी चाहिए कि कौन सी जॉब आप ढूंढ रहे हो, और उसके बाद स्किल्स पता होनी चाहिए what skills are required. So guys, मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे. That there was one student, ठीक है, एक हमारे स्टूडेंट थे. रिसेंटली आज मेरी उनसे बात हुई. हिज जर्नी कैन हेल्प यू. उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया आज से आई थिंक 1-2 साल हो गया फॉर श्योर. उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के बाद उनको कुछ इंटरव्यू मिले, बट इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे. आज से 1-2 साल पहले की बात है. तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए. तो उन्हें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिला जो प्लेसमेंट एश्योरेंस दे रहा था. तो इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया, बट वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा थी, लाइक मोर देन 1 लाख और समथिंग. बट इनको ऐसा लगा कि मतलब जॉब मिल जाएगी तो क्या ही है, सैलरी तो अच्छी है, तो मतलब कंपनसेट हो जाएगा आगे जाके. ओके, जस्ट कंफर्म मी माय ऑडियो इज क्लियर और नॉट. मैं माइक हाथ में ले लेता हूँ. ये भी इनको ऐसा लगा कि कंपनसेट हो जाएगा, सैलरी तो अच्छी होती है इन जॉब रोल पे. सो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चली रही थी, उसी दौरान उनका सिलेक्शन हो गया अच्छी कंपनी IQVIA में. अब सिलेक्शन के बाद मेरी उनसे बात हुई. उन्होंने बताया कि सर मतलब मैंने यहाँ पे भी ट्रेनिंग ली, बट ट्रेनिंग का ऐसा एज सच कुछ नहीं था. प्लेसमेंट भी मुझे यहाँ से नहीं मिला. जैसे हमने सेशन में सीखा था, जैसे आपने बताया था कि कैसे ऑनलाइन जॉब ढूंढनी है, वैसे ही मुझे IQVIA में जॉब ली. एंड रिसेंटली आज मेरी उनसे बात हुई एंड ही इज़ वर्किंग इन सनोफी और एज अ डेटा साइंटिस्ट. तो वो उनसे बात करके देख के काफ़ी अच्छा लगा.
और कुछ टाइम पहले मेरे एक दूसरे स्टूडेंट से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सर हमने 3 साल बाद कंपनी स्विच की एंड एटलीस्ट 80 to 90% हाइक मिला उन्हें करंट जॉब रोल पे। तो मैंने देखा कि द फर्स्ट गाय जिसने सबसे पहले हमसे ट्रेनिंग ली, फिर उसे कोई इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही थी प्लेसमेंट, तो उसने प्लेसमेंट के लिए वहाँ से वापस ट्रेनिंग ली, बट वहाँ पे उसको प्लेसमेंट तो नहीं मिली, लेकिन जॉब तो उन्होंने ऐसे ही ढूंढी जैसे हमने बताया था खुद से। और लेकिन वहाँ पे उन्हें सीडीएम रोल मिला था। सीडीएम रोल मिला, फिर भी उन्होंने हैप्पीली लिया, कभी भी ये नेगेटिव नहीं सोचा कि मैंने एक जगह से ट्रेनिंग ली फिर दूसरे जगह से ली प्लेसमेंट के चक्कर में, बट वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिला। और फिर उनको सीडीएम का रोल मिला, स्टैटिस्टिकल का भी नहीं मिला। लेकिन फाइनली ये देखो, ही वर्क दैट, वहाँ पे भी उनको 2-3 साल में अच्छा ग्रोथ मिला, 4 से सीधा 8 एलपी चला गया। और अभी ही इज वर्किंग इन सनोफी एंड डिफरेंट कंपनीज, लाइक I'll name it Sanofi only, and he is working as a data scientist. So see कि उन्होंने वो स्ट्रगल किया, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने 2 बार सीखा और उसके बाद व्हाट वी से कि सीडीएम ही रोल मिला मुझे। अभी उनको टोटल 3 साल हो गए, बट 3 साल बाद ही इज वर्किंग ग्रेट, लाइक सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। आज जब मैं लिस्ट रेडी कर रहा था कि कौन से हमारे स्टूडेंट हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जस्ट क्योंकि मैं डेटा ये मेंटेन नहीं करता था कि हमारे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और वो कहाँ पे हैं अभी, राइट। जब मैं वो डेटा गैदर कर रहा था कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहे हैं जो सेलेक्टेड है, तब मुझे पता चला, तब मैंने उनको कॉल किया और बात हुई और ये सारी चीज़ें पता चली। तो गाइज, इनिशियल जर्नी इज नेवर इजी। कभी बार ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से वहाँ भटकते हो, वहाँ से वहाँ भटकते हो, बट एट द एंड अगर आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, इट विल वर्क आउट। Okay, so there are 12 people online, guys, and you cannot see any questions. And guys, those who are looking for कि इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, just do let me know what are the things you are looking for related to clinical SaaS. आपको क्या कुछ और इंटरव्यू के क्वेश्चंस चाहिए रीसेंट, या इंटरव्यू पैटर्न चाहिए, या हायरिंग के बारे में जानना है? So you can ask me. You can tell me in the comments, and maybe I can, in this chat only, I can create video on that. So Akhil is telling interview topics and pattern. प्रसाद बोल रहे सर, मुझे मेडपेस कंपनी का इंटरव्यू मिला है, to 1 to 2 years experience. So Prasad, it means Medpace is having opening for 1 to 2 year of experience, right? The role is CDM programmer or statistical programmer. बट आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि आपको एक्सपीरियंस नहीं, बट क्या मैं उतना प्रिपेयर कर सकता हूँ? एक से 2 ईयर के इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? दिस इज योर क्वेश्चन, जस्ट कंफर्म मी, लाइक व्हाट इज योर नॉलेज? क्या आप फ्रेशर हो? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? क्या आपने ट्रेनिंग ली है? क्या आपको एसडी मैडम आता है? जस्ट कंफर्म मी द डिटेल्स सो आई कैन कंफर्म यू. Shiva, yes, offline classes are going on. मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मैं एसडीएम मैडम और टीएलएफ की ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है. ठीक है, तो जो ट्रेनिंग कंप्लीट की है ना प्रसाद आपने एसडीएम एडम एंड टीएलएफ की, तो जो डेटा सेट्स है ना, वो और डेटा सेट्स क्रिएट करो.
कम से कम 5-10 और एडम क्रिएट करो और टीएलएफ क्रिएट करो। सो अगर आप गुड नंबर ऑफ एसडीएम एडम टीएलएफ क्रिएट करते हो तो यू कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 1-2 ईयर एक्सपीरियंस गाइस, बिलीव मी गाइस। ओके, अगर आप अच्छे खासे डेटा सेट्स रेडी कर लेते हो एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग के, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है इजीली, लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस है। सो देन इट इज पॉसिबल प्रसाद। और जो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, लेट्स सपोज जिस भी स्टडी पे काम किया होगा और एसडीएम एडम क्रिएट किया होगा, तो अगर आपको एक्सपीरियंस दिखाना है एंड यू डोंट वांट टू फेक इट, जस्ट डू इट लाइक इंटर्नशिप, कि आपने इंटर्नशिप की है अपने इंस्टीट्यूट का या जहाँ से ट्रेनिंग लिया वहाँ का दिखा दो, या वहाँ का नहीं दिखा सकते तो फ्रीलांसिंग दिखा दो। बिकॉज अल्टीमेटली द मेन एजेंडा इज कि आपने वो डेटा सेट्स क्रिएट किए कि नहीं, आपने उस स्टडी पे काम किया कि नहीं। ओके, so guys, let's wait for another few minutes. If we are getting more questions, we continue. प्रसाद, मेरा पहला इंटरव्यू है सर, हाउ आई कैन प्रिपेयर, कोई प्लीज गाइड मी। सी, मेडपेस के लिए हमने इंटरव्यू पैटर्न का एक वीडियो बनाया हुआ है प्रसाद, जिसको एंड चेक माई ऑन माई चैनल। कितने राउंड्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सा टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। ऐसा वो जाके इंटरव्यू पैटर्न वाला मेडपेस इंटरव्यू पैटर्न मिस्टर सीकर, मेरे चैनल का नाम लिखो, वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, और सी इंटरव्यू में आपको क्या करना है प्रसाद, इंटरव्यू बहुत कामली देना, घबराना नहीं, कुछ नहीं भी आ रहा है। और जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, एंड जो भी अच्छे से पढ़ रहे हो और जो पढ़ रहे हो उसी को सीधे मेंशन करो। अगर कोई चीज़ नहीं आती या आधी आती है तो जस्ट मेंशन इट कि ये पूरी नहीं आती, बेसिक नॉलेज ऑफ दिस। ओके, एंड बिकॉज वो आपके सीवी को देख के भी क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई चीज़ आपको आ रही है लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, यू डोंट नो फुल्ली, जस्ट टेल देम कि आई एम एबल टू रिकॉल दिस मच ओनली नाउ, मतलब अभी मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें यू कैन डू इट। और भी चीज़ें यू कैन कनेक्ट मी थ्रू 1-to-1 काउंसलिंग, मे बी आई कैन गाइड यू दैट, बट ये कुछ चीज़ें, सम टिप्स एंड ट्रिक आई कैन शेयर यू राइट नाउ। Okay. Thank you, Prasad. So I can see 9 people are live and yet no questions. Why so? Okay. चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के टाइम पे तो मैं ट्रेनर हूँ, राइट, आई एम अ ट्रेनर। सो इफ आई हैव टू, अगर मुझे आज के टाइम पे अगर समझो कि मैं फ्रेशर होता तो मैं कैसे प्रिपेयर करता, क्या प्रिपेयर करता, क्या मेरा रोड मैप होता, आई विल शेयर यू, ओके, विद इन फ्यू मिनट्स। सी, सबसे पहले मैं SaaS सॉफ्टवेयर सीखता, द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल बी लर्निंग SaaS सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैं क्लिनिकल सीखता, ओके। इन द क्लिनिकल पार्ट आई विल बी लर्निंग व्हाट इज प्रोटोकॉल, CRF, Mockshell, SAP, SPEC, clinical trial phases, then SDTM IG, then about CDISC. These are the documents. I will be getting aware about this document. मैं सबसे पहले तो ये जानता कि डॉक्यूमेंट क्या है, इन डॉक्यूमेंट के बारे में जानना मस्ट है।
जिनके भी मैंने नाम लिए, whichever document name है ठीक है। उसके बाद मैं एसडीएम डेटा सेट क्रिएट करता। कितने डेटा सेट क्रिएट करता? एटलीस्ट 5। ओके, उसके बाद उतने ही 5 एडम डेटा सेट क्रिएट करता एंड सेम वे टेबल एंड लिस्टिंग। अगर मैंने इतना कर लिया, इफ आई हैव डन दिस, along with this what I have to do, कि क्या करना है मुझे कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आई हैव टू सॉल्व 100 और 200 क्वेश्चंस। वो मैं कहाँ से करता? इंटरनेट से क्वेश्चन ढूंढ लेता, चैट जीटीपी से क्वेश्चन ढूंढ लेता, वेबसाइट से क्वेश्चन ढूंढ लेता, या आप मिस्टर सीकर के वीडियो चैनल पे जाके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन वो कर सकते हो। प्लस व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू? गेट एन आइडिया अबाउट इंटरव्यू पैटर्न, कि इंटरव्यू पैटर्न इंटरव्यूज के कैसे होते हैं। यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, चैट जीटीपी से पूछो, या वर्किंग प्रोफेशनल लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करके पूछो कि अगर वो आपको जॉब नहीं दिला सकते या रेफरल नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इंटरव्यू पैटर्न तो बता दें, कि ये बता दें कब हायरिंग होती है। ओके, गेट एन आइडिया अबाउट डेली यू शुड मस्ट सॉल्व 2 क्वेश्चन। मैं अगर होता तो मैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करके ही सोता। इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद है ना, आपको रोज वही रिवाइज करोगे तो बोर होगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना प्लस क्लिनिकल पार्ट रिवीजन, एक डेटा सेट को वापस रिवाइज करना या उसके बारे में एसडीएम आईजी में पढ़ना। ओके, सो डूइंग दिस थिंग्स एंड अब अप्लाई करने के लिए क्या करता है, इतना करने से मेरा टेक्निकल रोबस्ट हो जाता है। उसके साथ अगर मैं ये रोल की तैयारी कर रहा हूँ तो आर सॉफ्टवेयर भी सीखता आज के टाइम पे एंड पाइथन भी। आज के टाइम पे सैस के साथ आर तो एकदम मस्ट हो चुका है, बिलीव मी गाइस, सैस के साथ आर मस्ट है एंड पाइथन इज लाइक आल्सो ग्रेट। अगर आप आज के टाइम पे इस रोल की तैयारी कर रहे हो, सैस आर एंड पाइथन तीनों सीख रहे हो, दैट इज लाइक गोल्ड। और क्लिनिकल पढ़ रहे हो। अब जॉब अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता आज के टाइम पे? सबसे पहली चीज और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मैं करता, दैट इज लर्निंग इन पब्लिक। मैं पोस्ट करता जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मुझसे मिस्टेक हो रही है, जो भी मैंने सीखा है। ओके, मैं लोगों को अपील करता है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, प्लीज टू लेट मी नो इफ यू हैव एनी वैकेंसीज। और ये सब चीजें मैं पोस्ट में करता, इनबॉक्स में नहीं। उसके साथ ही मैं इनबॉक्स में भी लोगों को अप्रोच करता है, आई विल बी आस्किंग देम many things, like if you can refer me or if you can guide me through interview tips or pattern or questions, कोई भी मुझे जो हेल्प उनसे मिल जाए। सो ये चीजें करने से आपके चांसेस इट विल इंक्रीज अप टू 80 to 90%। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। So this is what something I'll be doing. So अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। Is there any particular month to join your institute or else any month? Shivatmik, you can connect me. Okay, you can search on Google Clinical Study Academy, or in this video description there is an one-to-one counseling link. One-to-one counseling link मिल जाएगा. You can connect me through that. We'll have a discussion. You can discuss more about the training. You can ask me more questions, because I believe before joining any training you should ask all your doubts, questions, and then it's about when the batch is starting. So yes, the sessions are happening in batch, Shiva. It's not like every month or every day. So either you can connect me through one-to-one counseling, that is the best way. Either you can search on Google Clinical Study Academy, you will get our academy detail and my number as well from there. Tausif, hi sir, where to download SDM Atom mock dataset? Taufik is asking ki sir, where to download SDM Atom mock dataset? Taufik, next video will be on this only. I'm gonna make it available within less cost only. I'm gonna give a study data including protocol, SDM, Atom, table, listing, all the codes, solution code and the study data. So this is in my list. You can just suggest me what should be the charge I should keep for this study data. SDTL.
study, let me note it down, study material, right? So study does not include raw data set and all this data set. It also include uh, what do we say, protocol, mock shells, spec, SAT. Let's see. Maybe I'm planning to uh, share this. Just need to fix the cost. Ashika Yadav is asking, there is an institute that provides training SaaS-based, advanced and clinical along with 6 months internship. They also provide experience letter. How fees 1.40. That is more, Ashika. The train like the fees is high, very high. For base, advanced and clinical, right now we are giving training in around 40 something, including GST it is around 50 something. For base, advanced and clinical, including internship, okay, including internship. So you can get the same from us within 40,000 without GST. With GST it is around 50,000. Okay, so don't waste. Even if you are not doing from us, go somewhere else, but don't spend 1,40,000. It doesn't work. We are offering the same within 40 to 50,000 to you, so you can consider that as well. Okay, and Tosif, this is my question to you. I was planning to sell this study data. So what should be the cost for the entire study data, which include the raw data set, protocol, mock shell, everything along with solution code. Okay, so let's wait for others. Some people are still joining. Guys, just confirm me in the comments, am I audible or not? And if you are live and found this, live is this video is useful to you, give a like as well. Okay. So guys, do you have any more questions or we can end this live? You can let me know quickly. सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर लाइव हो तो लाइक करो, तो आई हैव सीन 4 लाइक्स आर दैट। तो किसी ने तो क्लिक कर दिया और वो पहले ही उन्होंने लाइक किया था और अनलाइक हो गया। फिर आई हैव सीन कि वहाँ पे फिर चेंज हुआ, अगेन समवन फाउंड कि अनलाइक हो गया तो लाइक किया वापस। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, दैट्स फाइन। So guys, right now, if you're preparing for statistical programmer role now, and if you're learning SAS or Python and clinical part, you are eligible for at least 3 to 4 roles. In CDM, 2 to 3 roles. One is statistical programmer, another is data scientist as well. In CRO industry, there is a role data scientist as well, and another is biostatistician. So if you are, if your educational background is from statistics or mathematics, you are eligible for a role named biostatistician. So 4 to 5 roles you are eligible for if you are preparing, these things, SAS or Python and clinical part full. So I'm not asking you ki you should have the idea.
तो सिर्फ एज आस्किंग इन जनरल कि अगर मैं वो पूरा मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, स्टडी डेटा पूरा, डेटा सेट्स जिसमें एसडीएम, एडम, टेबल, लिस्टिंग सब कुछ है, और उनके मॉकशल्स हैं, प्रोटोकॉल है, सैप है, इट मींस एंटायर स्टडी डेटा, वो एक स्टडी ही है जैसा रियल टाइम में काम कर रहा है। तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए? तो वो मुझे हेल्प करेगा, बिकॉज सी आई कैन डिसाइड एनी कॉस्ट, बट फ्रॉम एन यूजर पर्सपेक्टिव आप जिसको चाहिए उसके हिसाब से उसका कितना होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। Sagar is asking, hi sir, can you tell me about actual salary structure as training as fresher? See, on an average, you can get up to 4 to 5 LPA within 1 year. The maximum is up to 10 LPA. आप 10 लाख या 11 लाख तक, मतलब the maximum I have seen that is 11 point something, up to 12 lakh, that is the maximum for fresher. But on an average, it comes around 5 LPA. ठीक है? और लेट सपोज अगर आपको 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो इट कैन गो अप टू 20 LPA. अगर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सो फ्रॉम इजीली 13 LPA टू 20 LPA. एंड इफ यू आर हैविंग 5 to 6 years of experience, then 30 to 40 LPA. So salaries are great. The only thing is initially आपको पढ़ना पड़ता है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है. That is something you have to do initially. इनिशियली मेहनत करने के लिए रेडी रहो थोड़ा सा, देन ओनली यू कैन गेट दिस. ओके, सी गाइस, उदास नहीं होते. कोई सैड इमोजी वो कर रहा था. मैं आपको रिसेंट सिनारियो शेयर किया, राइट? आई हैव शेयर्ड यू कि हमारे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने 2 साल पहले हमसे सीखा, फिर कोई इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑफर कर रहा था, वहाँ गए, उनको लगा प्लेसमेंट देगा, अच्छी खासी फीस ली, बट प्लेसमेंट तो नहीं मिला. उनको वैसे ही जॉब मिली जैसा हमने उनको बताया था ऑनलाइन ढूंढने के लिए, और हमने पढ़ाया था. उन्होंने ऑनलाइन जॉब ढूंढी, वो भी उनको सीडीएम में मिला, स्टैटिस्टिकल में नहीं मिला. ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद सीडीएम. सीडीएम में ग्रोथ हुआ, लेकिन उस कंपनी में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, एंड इट वाज टाइम टेकिंग एज वेल. उनका बहुत टाइम जा रहा था, वो बता रहे 10 घंटे चले जा रहे थे. फाइनली उन्होंने स्विच किया. नाउ ही इज वर्किंग एट अ रोल डेटा साइंटिस्ट. सैलरी भी बढ़ गई, 40-50% का हाइक सैलरी में भी आ गया, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, और वर्ल्ड की एक टॉप कंपनी में है. एवरीथिंग इज ग्रेट. सो यू नीड टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस जर्नी. मतलब मानो या ना मानो, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, व्हाट आई फील कि ट्राई व्हाटएवर यू वांट टू ट्राई इन दिस एज. ये जो आपकी एज है, ओके, कॉलेज पूरा करने के बाद जो भी ट्राई करना है ट्राई करो, एंड डू द रिसर्च, ढूंढो, लोगों से जानो, पूछो, बाहर निकलो. ओके, घर से बाहर निकलो. घर से बाहर निकलो यानी चेंज द सिटी, मूव टू बैंगलोर, हैदराबाद इफ पॉसिबल. कनेक्ट टू पीपल, लोगों से बात करो, ऑनलाइन बात करो, एंड गेट एन आइडिया. ओके, दुनिया ओपन होगी. बिलीव इट्स लाइक लाइफ इज लाइक लेडर्स. एक सीढ़ी के बाद दूसरी, तीसरी, वो सीढ़ियाँ कभी खत्म नहीं होती. आइदर फॉर मी आइदर फॉर यू, फॉर बोथ इट्स सेम. हम दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, एक एक करके आगे बढ़ना होता है. Tausif, thanks for giving this idea, because this will help us to decide कि क्या रेंज हम रख सकते हैं. थैंक यू. Sagar, in clinical science program, job role is totally offline work, office work. No, it's not like that. These roles, like statistical programmer or clinical science programmer, you can take work from home. हमारे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम. सम हैव टेकन परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, मीन्स हमेशा ही वो घर से काम करेंगे. नॉट एवरीवन गॉट इनिशियली. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद यू कैन फाइंड अ कंपनी हु इज गिविंग वर्क फ्रॉम होम, या इवेंचुअली कोई भी कंपनी आपको दे देगी. इफ योर सेम कंपनी इज नॉट अलाउइंग, यू कैन स्विच टू अ कंपनी हु इज ऑफरिंग यू. क्योंकि इस फील्ड में, इस रोल पे कंपनीज वर्क फ्रॉम होम देती हैं.
So guys, I can see 8 people are live, but I'm having only 5 likes. Why this biasness? ऐसा क्यों है? Okay. Yes, Sagar. Shivani is asking, hi, I'm a automation developer, completed MSc Computer Science, today to statistical programmer. As an automation developer, Shivani, what you're doing? See, if you're switching to statistical programmer role, the benefit for you is the very first pharmaceutical company. They give better stability than anyone else. And statistical programmer, it's a class A job, means it is one of the highest paying job in CRO industry. So better stability with a high grade job, which includes data analysis related things like SAS, R, and Python, and clinical knowledge. It not only gives you high, growth, pay or grade. It also gives you better stability and better knowledge. Working on this role, you get the knowledge of entire industry. If you are getting prepared for this role now, if you learn the skill for this role, you will find eventually you are getting the knowledge of entire industry, the CRO industry, for all the roles. Because this is one of the top role, right? So you get an idea that what is happening from bottom to top. So obviously you should consider. Anshika is asking, sir, please make a video on resume building. For sure, Anshika. Rosanna Datta. So what are the chances of getting or as a fresher job without reference? See, getting job is in process that takes time. That's what my suggestion is. Once you're preparing for this role, start applying for job. Some people get the interview, किसी को जल्दी इंटरव्यू मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है. जिसको टाइम लग रहा है, आप क्या करो, अगर आप खाली बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग एम्प्टी, कोई भी एक जॉब ले लो जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेवेंट हो, और उसके साथ ये कंटिन्यू रखो. ऑन दिस रूल कीप अप्लाइंग फॉर जॉब, और जैसे इस पे जॉब मिले स्विच कर लो. सो बाय डूइंग दिस योर टाइम इज नॉट वेस्टेड, राइट? Shivani said, yes, I have good knowledge of R, Python. One more thing, I wanted to ask, pharma company hire statistical programmer? CRO and pharmaceutical, and even service-based company like TCS is also having statistical programmer. Cognizant, Accenture, all these companies hire. So CRO and pharmaceutical companies mostly hire for this role, Shivani. But yeah, like these industries are top-notch industry, because whenever recession comes or pandemic situation come, other industry go down, pharmaceutical goes up. Bargain from last 2 years and much. It's helpful, but getting Bargain, like what's your educational background, and uh, from where did you taken training, from where you have taken training, and how you are applying for job? Please share me, maybe I can guide you. I'm pharmacy, okay. And then have you learned SAS, clinical SAS? Like, have you taken the training? What are the ways to follow up after applying for job? फॉलो अप करने का सबसे बेस्ट तरीका है तौसिफ, जस्ट गो एंड कनेक्ट टू देयर एचआर ऑन लिंक्डइन. लेट्स सपोज एक्यूआ में ओपनिंग निकली, आपने अप्लाई कर दिया. नाउ connect to their HR, connect to their manager, director, their employees, those who are working as a statistical programmer.
रीच आउट टू देम, उनसे पूछो कि सर वैकेंसी निकली है तो प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज कंसिडर माय सीवी, टेक द गाइडेंस फ्रॉम देम और टेक द फॉलो अप. Barge is telling Hyderabad Training Institute I have taken. Okay. So Barge, maybe you can connect to me through one-to-one counseling session. You can find the link in the description. Maybe I can guide you. It's all about mindset. आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये नहीं तो आगे क्या करना है, ये नहीं तो आगे क्या करना है. अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो कैसे उसको ठीक करना है. कोई चीज़ पढ़ रहे हो नहीं समझ में आया तो कैसे ठीक करना है, हाउ टू रीवर्क, कैसे उसको समझना है. शिवानी इज आस्किंग सर प्लीज प्रोवाइड अ कोर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट. शिवानी, हमने एक बैच लॉन्च किया था टू बी ट्रू. वी हैव स्टार्टेड अ फ्री बैच. हमने उनको 3 महीने पढ़ाया पूरा और बहुत मज़ा आया. लिटरली उन स्टूडेंट्स को पढ़ा के ऑफलाइन रखा था मैंने, बहुत मज़ा आया. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारे साथ और भी लोग काम करते हैं. एडिटर्स आर देयर, सर्वर के कॉस्ट होते हैं, टीचर्स हैं, प्लस ऑफिस का कॉस्ट है, लाइट बिल है, इंटरनेट बिल है, एवरीथिंग इज है. अगर मैं टोटली फ्री कर दूँ तो वो खर्चा कैसे चलेगा. फिर तो हमको सिस्टम को चलाने के लिए भी एक मिनिमम रखना पड़ता है. बट शिवानी डोंट वरी, मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ. ओके, कल ही वीडियो अपडेट होगा जिसकी फीस बहुत ही कम होगी. ओके, उसमें एंटायर बेस एडवांस क्लिनिकल 10 to 12 में के बीच में आ जाएगा, 10 to 15 के अंदर आ जाएगा. 15,000 के अंदर एंटायर बेस एडवांस एंड क्लिनिकल प्रोजेक्ट के साथ बेसिस एग्जाम प्रिपरेशन मीन सारी चीज़ें कवर कर लेंगे. ओके, एंड दैट यू कैन डू ऑनलाइन एज वेल. तो ये करने की हम कोशिश कर रहे हैं. 2 कोर्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, 7,000 में और एक अराउंड 15 के आसपास. लेट्स सी, तो हर कोई अफोर्ड कर सके इस हिसाब से हम लॉन्च कर रहे हैं. कल की वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा. विल गेट द अपडेट. सर आर यू प्रोवाइडिंग क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बेसिक एडवांस ट्रेनिंग? Sagar, I have worked on this role in the past. So I do provide complete training, that is SAS base, advanced, in clinical, overview about all the documents, plus project, plus interview preparation, plus mock interviews, plus CV making test, everything. Medicine Hub. Sir, I have completed base and advanced and patient affinity in clinical science, how to approach as a clinical science. Before jumping to the clinical SaaS, read the SDMIG. Whichever data set you are trying to create now, let's suppose in SDM you are trying to create CM data set or AE data set, reverse unit. तो उसके बारे में जाके SDMIG में पढ़ो, आपको क्लियरिटी आएगा. Okay. We also SaaS macros. Yes, Shivani, that is a part of advanced SaaS. I do teach complete SaaS. Okay. Macros, do loop, SQL, everything. Why you have heard a lot about macros? Because macro is used to automate your code, automate your process. That's why. We do, take a lot of sessions for macro, and we do even share how you can automate the process. In the session, we will show you the examples, like 4 or 5 different examples, how you can automate the things. Shivani is asking, sir, is opting for medical writing course on Udemy worth? See, initially, medical writing, I think for medical writing or these roles, you can directly apply for a job. Why to take a course? Shivani Yadav, now we can implement Gen AI in SaaS. Will you give idea about this too? Yes, obviously. But right now on this role, generative AI is not there. On statistical programmer Shivani or clinical SaaS role, generative AI is not there. The only thing that is happening,
They are automating the codes using macro. In R or Python, they are creating libraries. These things are happening. Generative AI is not happening currently, but I'll give you the idea how it's gonna work in clinical. A glimpse of it. Awesome. LinkedIn is good, but sometimes HR manager don't accept the request and don't connect, or those who connect take too much time to accept. I'll share you a trick tomorrow. ठीक है? कल इसके बारे में ट्रिक मैं शेयर करता हूँ. Means tomorrow I'm going to create a video. There is an option through that you can get their email ID and different details. Saga, let's do something. The last 1 year regarding base program detail. Okay, Sagar, what's your educational background? So now I can see 9 people are live and 8 likes. Someone is there who didn't like the video. Let me check if I should have an option, right? Who didn't like? Can you guide me? Should I go statistical programmer field or ML domain? See, ML is not a domain, that is a part of data industry. When we say Nashvani, the role data scientist. So data scientist is someone who is having the complete knowledge from data collecting to automating the process. Okay, ML is a part. EIML, generative AI, data analysis, those can be implemented anywhere. So first you need to figure out something stable, like some stable role, like the statistical programmer role, and then you should figure out key how I can implement ML on this role. Then you will be the topmost person for this role, Shivani. Or there are data scientists who are working in CRO industry as well. So instead of statistical programmer or clinical science programmer, you can directly apply for data scientist role as well. Medicine Hub on my channel, you can simply go and check interview questions, and there is a playlist interview question. You will find a lot of questions, and even if you write on YouTube interview questions and our channel name Mr. Seeker, you will find a lot of videos where I have talked about the question and given the solution as well. I've done B-Pharmacy and done my medical coding training total 3 months. Okay, that's great, Sagar. Medicine Hub, to practice for interview, I have created videos based as interview preparation. Or like you can go and check interview preparation for clinical science programmer. Let me write this as well. What I'll do, because those videos are old now. Last year I've created, I'll create fresh videos. How to how to prepare for interview, right? So I'll create a separate video on this medicine hub, how to prepare for interview as a fresher. Shivani is telling, sir, I'm confused what to choose.
Next, recently graduated degree pharmaceutics academy. Medical coding. See, Shivani, if you have completed your education or if you are about to complete and if you feel your financial condition is not good, get any job that is related to your domain as per educational background. But eventually, you should target higher paying roles like CDM programmer, statistical programmer, or data scientist in CRO industry. These are the high paying jobs. So, major role is CDM programmer and statistical programmer. Data scientist vacancy is less as of now. Anushri, what are more skills one should learn on to jump from statistical programmer to data scientist level? What are salary difference? See, right now the salaries for data scientist and statistical programmer is almost same, Anushri. Okay, this clinical industry is trying to evolve and try the data scientist thing in the clinical industry. Right now, on both of these roles, if you are preparing for data scientist role or statistical programmer role, the skills are almost same. Having the knowledge of SAS, R, and Python, okay, and the industry knowledge, clinical part knowledge. The only difference is for the data scientist role, you might need to learn 10-20% more. What is that 10-20%? That is the AI ML part. Okay, but for now, in this CRO industry, data scientist vacancies are very less. Okay, so guys, it seems कि मेरा mic off हो गया है because of the battery is low. I got the notification now. Is my voice is audible? Am I audible to everyone? Just confirm me quickly. Am I audible to everyone? Okay, that's great. Because the mic is not working, guys. That's fine. So the voice is directly coming from PC. So I was explaining to Anushri, recently this clinical industry or CR or pharmaceutical industry have tried exploring data scientist. So they have roles, but that is very less. जो डेटा साइंटिस्ट रोल है उसकी वैकेंसी बहुत कम निकलती है. ओके, टॉकिंग अबाउट द पे फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर सैलरी सेम है. क्यों? दोनों की स्किल ऑलमोस्ट सेम जैसी ही है. दोनों में ही आपको SAS और पाइथन का नॉलेज होना चाहिए. ओके, एंड या दैट्स अ थिंग. लाइक अगर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको पाइथन पे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा. स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू वर्क मोर ऑन SAS बेस्ड एडवांस एंड क्लिनिकल. दैट्स ओनली डिफरेंस. बाकी सब सेम है. ओके, Shivani is asking, will you provide placement in course? No, Shivani. We tell this now to our student on the first day कि we don't provide placement, but yeah, we can guide you and we can help you. अगर हमें वैकेंसीज के बारे में पता चलता है तो हम आपको बता भी देंगे और वैकेंसीज शेयर भी कर देंगे. But we don't assure कि हम आपको प्लेसमेंट करा देंगे. Of course, there are sessions how to find jobs, how to get interviews, what are the best ways, how previous student got selected. ये सारे tips and tricks शेयर कर रहे हैं. On top of that, if we are getting to know about vacancy, we gonna share in a group. हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे. But मतलब ऐसा नहीं होता कि हम आपको एश्योर कर दें. अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मुझे पता चला कि कहीं वैकेंसी और मैंने बताया कि ये इंटरव्यू ले रहे हैं, दिस पर्सन इज टेकिंग द इंटरव्यू एंड दिस इज द कंपनी नेम. मैंने वो डिटेल शेयर कर दी. अभी वो कंपनी में मेरे अचानक से 7 से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए. मीन्स टोटल 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ज्वाइन 7 से 8 नहीं किया, बाकी 2 को कहीं और मिल गया, वहाँ चले गए. तो क्या मैं बोलना ये शुरू कर दूं कि मैंने एक साथ 7-8 बच्चों का प्लेसमेंट करवाया? नहीं, आई कैन नॉट लाई. क्योंकि मैं जानता था वो अपॉर्चुनिटी फिक्स नहीं थी, वो मेरे पास अचानक से आई. आई नेवर नो कि वो नेक्स्ट टाइम कब आएगी. मुझे पता चला किसी से कि वहाँ पे इंटरव्यू है, मेरे ही कनेक्शन स्टूडेंट्स के थ्रू, और मैंने बाकी स्टूडेंट को शेयर कर दिया. दे गॉट द इंटरव्यू, दे गॉट सेलेक्टेड, बट दैट इज नॉट इन माई हैंड. राइट.
Next question is from Naushik here. Hi sir, currently I'm doing e-pharmacy. Sir, should I start learning? See guys, what is the best time for learning? What I feel the best time for learning, that is during your academic. Because क्या होता है, after completing your education, once you start learning the skills, right, the market demand, let's suppose whatever role in demand, you will try to gather skill for that. तो अगर आप एजुकेशन के बाद ये काम शुरू करते हो, इट गोना इंक्रीज योर टाइम, राइट? लेट्स सपोज आपने कॉलेज खत्म हो गया, 3 साल का कॉलेज था, एंड राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर जॉब एंड यू गॉट टू नो दीज आर द हाई पेइंग जॉब्स, बट उसके लिए तो नॉलेज होना चाहिए, ये स्किल सीखनी पड़ेगी. Now either you're learning by your own or from any institute, you're going to spend easily 4 to 6 months. आप सीखने में 6 महीने स्पेंड करोगे. Another few months in getting interview and cracking the job, क्योंकि इंटरव्यू भी पैटर्न में निकलते हैं, वो हर रोज तो निकलते नहीं, हर दिन में निकलते, 3-3, 6-6 महीने में निकलते. सो इट कैन कॉस्ट यू 1 year, 1 साल का टाइम लग सकता है. लेकिन या ऐसा भी हो सकता है आपको 6-7 महीने में सिलेक्शन हो जाए सीखने के बाद ही. ऐसा भी मेरे स्टूडेंट का हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान सिलेक्शन हो गया, तब मैं बहुत खुश हुआ. किसी का ट्रेनिंग के बाद तुरंत हो गया और किसी को 1 साल लग गया. सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ और टू लर्न एनीथिंग इज डू इट ड्यूरिंग योर एकेडमिक. अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज में हो, तो उसी टाइम पे करो. तो आपको पढ़ाई पूरी हो करने के बाद अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल 6 months और 1 year. जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हुई, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब, यू ऑलरेडी हैव द स्किल्स, स्टार्ट अप्लाइंग, गेट इंटरव्यू, क्रैक इट, एंड दैट्स ऑल. I hope you got clarity, Naushik here. Sagar is asking, sir, last question, please tell clearly what is the medical course clinical SAS remove effect. See, there are roles where AI can literally impact. Those are roles like uh, data collection or basic data work. Roles like CDM programmer, statistical programmer, biostatistician, data scientist, that cannot be impacted. These are the final level roles. यहाँ पे डेटा का फाइनल काम होता है. सो जो लोअर लेवल वर्क होता है, लो लेवल वर्क होता है, वहां पे ऑटोमेशन हो सकता है. द रोल्स और द वर्क विच इज फाइनल लेवल, जहाँ पे फाइनलाइजेशन हो रहा है, देयर द ऑटोमेशन कैन नॉट हैपन. इवन ऑटोमेशन इज हैपनिंग, जैसे कि रोल्स सीडीएम प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, या इन रोल्स पे ऑटोमेशन हो रहा है. ऑटोमेशन क्या होगा, जो चीज रिपीट हो रही है बहुत बार, सेम और रिपीट हो रही है, दैट विल बी ऑटोमेटेड. इट विल नॉट ऑटोमेट द होल रूल, बिकॉज इस रूल पे हमें डिस्कशन करना होता है. यू नो, वी नीड टू डिस्कस विद डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टडीज. तो वो एआई डिस्कशन नहीं कर सकता. एआई कैन नॉट, यू नो, go up to that level. So maybe some small things जो हमारे ही रोज में जो बेसिक चीज़ें हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे. इवन वी डू दिस. SAS में टॉपिक है मैक्रो का यूज़ करके हम चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, अपने ही कोड को ऑटोमेट करते हैं, यू नो. सो बेसिक थिंग्स फॉर श्योर इट विल बी ऑटोमेटेड, एंड आई फील दैट इज गुड ना, कि जो बार बार वाला काम है वो तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए. बिकॉज on this role you have to do multiple things. आपको काफी चीजें करनी पड़ती है. Vijay Pratap is telling, talk something about scope of R and KD. Obviously, I have told a lot कि in 2025, if someone is preparing for this role, after SAS, R is must. R की ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है, और उसके बाद पाइथन के लिए तो दैट इज गुड टू हैव, वो और अच्छी बात है. सो कंपनीज आर ऑलरेडी यूजिंग SAS एंड नाउ दे आर ऑप्टिंग R एज वेल. वो SAS के साथ R भी यूज कर रही है. सो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग, उनके लिए मस्ट है SAS और R, ये दो सॉफ्टवेयर तो सीखने ही सीखने, एंड पाइथन इज समथिंग एडिशनल, गुड टू हैव.
So Vijay, I'm already preparing videos for R like from last 1 year, right? लास्ट 1 ईयर से मैं आर के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ. मेडिसिन हब ओनली सैस नाउ. ओनली सैस ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट नहीं होगा, अभी भी स्टूडेंट हायर होते हैं. सैस तो अकेला नहीं काफी है, सैस के साथ आपको क्लिनिकल का नॉलेज होना चाहिए. क्लिनिकल में जैसे कि एचडीएम एडम टेबल लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ओके दिस थिंग. सैस के साथ ये तो मिनिमम नॉलेज है, सैस एंड क्लिनिकल, ये दो तो नॉलेज होना ही चाहिए. प्लस आर भी होना चाहिए एंड प्लस पाइथन भी. तो अगर आपको आर और पाइथन नहीं भी आता है तो भी एक टाइम पे चल जाएगा, लेकिन सैस और क्लिनिकल तो मस्ट होना चाहिए. लेकिन एक टाइम पे चलेगा. मार्केट की रिक्वायरमेंट तो ये है इन द सॉफ्टवेयर पार्ट की, दो सॉफ्टवेयर तो मिनिमम आना चाहिए, सैस एंड आर. एंड इन द डोमेन पार्ट क्लिनिकल पूरा आना चाहिए. Prosanjita, don't why people are worried about AI if things can be get automated then by the automation will be done by human only as per the AI is developed by humans only for ease. Yeah, Prosanjita, like it's Prosenjit. Prosenjit, recently there was one company, I forgot the name. They got funding from Microsoft because they were telling we are the one of the biggest AI company for website creating. And then some people found कि they are not creating the website by AI. They are in the backend. Some programmers are there who are doing the work. Now the company went to bankrupt. Because actually humans were working and they have showed in the industry and to Microsoft everyone कि AI पूरा काम कर रहा था और एक्चुअल में पीछे लोग कर रहे थे, ह्यूमन कर रहे थे. सो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया. द सेम हैपेंड फॉर वन ऑफ द कंपनी. एक कंपनी ने क्या किया था, दे हैव रिप्लेस्ड ऑल देयर चैट्स. जो भी चैट्स का प्रोसेस था या कॉल का प्रोसेस था, दे हैव ऑटोमेटेड विद एआई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि दे फाउंड कि उनकी सेल्स और उनका काम डाउन चला गया. सो दे हैव टू अगेन रिप्लेस एआई विद ह्यूमंस. ऐसा हुआ. So guys, AI is like learning from us. AI gonna help you like Google and ChatGPT. It is not taking your job. Sagar, you can connect me through one-to-one counseling. You can get the link in the video description. There is an option one-to-one counseling. Through that you can connect to me. Okay. Either you can search on Google Clinical Study Academy and you will get our details and our number as well from that. Satyam Salokhe, basic knowledge of R and Python is needed along with SAS. Satyam, that is must. That is correct. What I feel in 2025 कि SAS and R तुम अच्छे से सीख के जाओ and basic knowledge of Python. Okay. But if not, in the worst case, तो SAS तो पूरा सीखो and basic of R and Python. Just let me write complete. Suman Latha is asking clinical SAS has a future or not. Sir? This role is already like evolving as per the future. जैसे कि इस रोल में देख लो, आज से कुछ साल पहले या पिछले 20 सालों से the person should have only one software knowledge SAS. But आज देख लो, along with SAS the person should have R knowledge as well and if Python possible, Python knowledge as well. The role is evolving with future. It is not going. The role is the future itself. It is not going. It is not going to be fully replaced or automated. It's gonna evolve with time.
ठीक है, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट पास्ट ईयर्स, सिर्फ सैस सॉफ्टवेयर और क्लिनिकल का नॉलेज इनफ था, बट अब आरपी आना चाहिए और पाइथन भी आना चाहिए. इट्स इवॉल्विंग. So obviously clinical SaaS is one of the highest paying job. And yeah, अगर कंपनी ने इस रोल पे इतना पे दे रहा है एंड द ग्रेड इज हाई, obviously it has a future. Okay, so guys, I think I have taken sufficient question. So guys, what do you think? There are total 10 people live. This live discussion when we should have, like earlier I used to do in every week. I was doing 2 days. Now I went from week to month. Now I'm doing in month maybe 2 days. So what do you think? It should happen on every week, like हर week में एक दिन सैटरडे या संडे या फ्राइडे या वीक में 2 बार होना चाहिए. Do you found this live discussion is useful? If yes, then please do let me know कि ये कितनी बार होना चाहिए वीक में. Medicine Hub is telling every week sir. How about others? I can see 10 people are live. अब 10 लोग live हो, but सिर्फ एक ने बताया. Come on, quick, जल्दी जल्दी जल्दी. In a week, there should be one live session or two live session. For sure, Medicine Hub. Uh, I'll shortly create a new video for interview preparation. Okay. Let me write this. Let me write your question, or else maybe I can follow. Okay. YT चैनल इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन ऑनली, मतलब मैंने बोला कि हमने फ्री बेंच लॉन्च किया, उनको पढ़ाया भी 3 महीने, बट इवेंचुअली हमको लगा कि उससे वो सस्टेनेबल नहीं है. उससे क्या हो रहा था कि हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उससे हम अर्न ही नहीं कर पा रहे थे, तो प्रॉब्लम हो गई. तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया है, कल एक वीडियो लॉन्च होगी, मैं आपको बताऊंगा. हम एक बजट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं विद इन 15,000. ओके, तो जो पूरा लाइव भी अटेंड कर सकती है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, बट इसमें कुछ लाइव सेशंस भी होंगे. तो 2 तरह के कोर्स होंगे, एक अराउंड 7,000 का होगा, एक अराउंड 13,000 का होगा. और दोनों में ही जो सेकंड वाला है जो अराउंड 13,000 का होगा, उसमें लाइव डाउट डिस्कशन भी होंगे. सो ऐसा कुछ लॉन्च करने का सोच रहा है. ओके, एक अफोर्डेबल प्री रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें डाउट डिस्कशन लाइव हो, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और प्रोजेक्ट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी. सो ओके, बिकॉज डूइंग इट फॉर टोटली फ्री इट वाज नॉट वर्किंग फॉर अस, मतलब क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे मिलने चाहिए, राइट, फॉर श्योर. मेंटेन करने के लिए मिनिमम, जहाँ पे मैं ऑफिस पे हूँ, जो इंटरनेट है, जो सारी चीज़ें, टीचर्स हमारे साथ जो काम करते हैं, राइट, सब्सक्रिप्शन सारे, दैट्स अ थिंग. One in a week. My dear brother, one question can you solve? Yes, Anupam, please tell me. MM says Terry. Hello.
Okay, guys. So if you have any question, you can ask me quickly, or else I'm about to wind up this live discussion. Okay. It seems now no more questions. So, guys, I hope I have answered most of your question. And MM Derry says, I want to join your SAS program online class. If you have any inquiry, take it. So there are live classes, MM says Derry. You can connect me through one-to-one counseling. In this video description, you can find one-to-one counseling session, or you can go on Google and search Clinical Study Academy. You'll find our Google page, and you will find even our number. You can call me from there as well, or you can, in this video description, there will be one-to-one counseling session. You can connect me through that as well. Okay. So there are multiple ways you can connect me, and then you can start the training. So guys, I hope that's all. That's all for today. So thank you everyone, and bye bye everyone. And don't worry guys, it's a journey. Either you will land up the job, this job. Either you will land up something great. Don't worry. Life is all about in motion. Be in motion. Don't be at one place. Okay. Till the time you feel that I'm enjoying my life, I got what I wanted in life. Be in motion. Keep learning. Okay. Yes, you wanna get the certification for training and internship both. Okay. So guys, that's all for today. Thank you everyone, and bye bye everyone.